Moving on, the cash that tumbled out of Justice Verma's residence had put the spotlight on the judiciary and captured the attention of the entire country. Now, the controversy had every element of shock, mystery and denial. While questions remain on the staggering unaccounted cash and who it belongs to, the judge is likely to face music. Sources say that the government is going to bring an impeachment motion against Justice Verma in the upcoming monsoon session. Since such a motion would require the opposition to be on board, the government has already reached out to the opposition and is hopeful of getting support from many opposition leaders. Now, the action comes after Justice Verma refused to resign from Delhi High Court despite the corruption charges that he faces and the pile of cash that stared at the judiciary. The Chief Justice of India had written to President and Prime Minister about impeachment process to be initiated against him, along with the report of the Supreme Court appointed panel investigating cash that was found at the residence of Justice Verma. Let's tell you more about how exactly an impeachment motion would work in the first place. The first step would be 100 Lok Sabha MPs to give signed notice to Speaker or 50 Rajya Sabha MPs to give notice to the Chairman. Step number 2, impeachment motion to be tabled. Step number 3, a 3-member committee will investigate the complaint. Supreme Court judge, Chief Justice and distinguished jurists are going to be part of that. Step 4, the committee will then submit the report. Step number 5, report will be tabled in Parliament and it will be debated upon. Step number 6 would be motion to be adopted by 2/3 majority in both the houses. Step 7, once adopted in both the houses, it is then sent to the President. And step number 8 is the President to issue. And this is the final step, when the President will issue order for removal of the judge. Let's also listen into some of the reactions coming in from the opposition camp on this. से बातचीत की जाएगी ना, तो जब विपक्ष से बात की जाएगी, अभी तो जहां तक मुझे मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है। अब सरकार के पाले में बाल है, जब वो ले आएंगे, तथ्य रखेंगे, बातचीत करेंगे, तो हम निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के विरोध में रहेंगे। निश्चित रूप से अगर इम्पीचमेंट की बातें आ रही हैं, हालांकि ये बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे है और हमारी पार्टी जरूर इसमें मैं समझता हूँ उनसे अगर अप्रोच किया जाएगा तो जो राज्य हित में है, राष्ट्र हित में है और सबसे बड़ी बात न्याय के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे, सरकार के साथ पार्टी जरूर खड़ी रहेगी। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जहां लोगों की न्याय की अगर आस्था है, जहां किसी के साथ अन्याय हुआ, अगर वही करप्ट हो जाए तो फिर लोग जाएंगे कहां? तो मैं समझता हूं अगर इम्पीचमेंट की बातें आती है तो एक अच्छा कदम जरूर मैं कहना चाहूंगा इसे। देखिए, महाभियोग जब आएगा तो समाजवादी पार्टी उस पर निर्णय लेगी, क्योंकि देश की अदालत ने एक कमेटी बना के उसकी जांच की थी। उस जांच रिपोर्ट में क्या है वो बंद लिफाफे में था, उसकी कोई जानकारी समाजवादी पार्टी को नहीं है। इसलिए जब मामला पूरा सामने आएगा, महाभियोग सामने आएगा तो समाजवादी पार्टी निर्णय लेगी।